Today in this video we will learn about Roman numerals. Roman numerals were originated in ancient Rome to calculate the number and the values. There are basic 7 symbols for Roman numerals that are I, X, V, L, D, M and C. Now we will discuss about value of Roman numerals in Hindu Arabic. I means I here stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L stand for 50, C 100, D stand for 500 and M for 1000. Now we will discuss about rules of writing Roman numerals. Rule number 1. When we repeat the Roman numerals, they are added in the number. For example, I means 1. If we write I 2 times, that it means 1 plus 1, that is 2. In the meantime, if we repeat I for 3 times, it means 3. 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. In the mean way, x means 10. If we repeat x 2 times, then it means 20. C value means 100. If we repeat C 2 times, then it means 100. 200. No Roman numerals can repeat more than 3 times. किसी भी Roman numerals को हम 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 40 लिखना है तो उसको हम 4 टाइम x नहीं लिख सकते. उसके लिए हमें L यूज़ करना पड़ेगा और उसके बैक साइड पे x आएगा. The Roman numerals V, L and D are not repeated. ये जो Roman numerals है V है, L है और D है, इसको हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते. Now rule number 2. When a digit of lower value is written to the right or after a digit of higher value, the values of all the digits are added. Now students, we have 2 hands. If we write the Roman numerals in right side, then they will add in the number. For example, V की अगर हमने right side पे I लिखा है तो it is added in the number. 5 plus 1 is equal to 6. राइट साइड हमेशा क्या शो कर रही है हमारे पास? प्लस. जैसे x की राइट हैंड साइड पे अगर हम I लिख रहे हैं, दैट इज एडेड इन द वैल्यू. 10 plus 1 is equal to 11. Rule number 2. When a digit of lower value is written to the left or before a digit of higher value, then the value of lower digit is subtracted from the value of the digit of higher value. Now we have left hand side. अगर left hand side पे हम I को लिख रहे हैं, that is subtracted. वो क्या होगा हमारा? माइनस. For example, x means 10. x का मतलब क्या है? 10. अगर x की लेफ्ट हैंड साइड पे हमने I लिखा है, इट मीन्स इट इज सब्ट्रैक्टेड. 10 minus 1 is equal to 9. इसी तरह से L है, L मीन्स क्या होता है? 50. 50 की लेफ्ट हैंड साइड पे अगर x जा रहा है तो वो हमारा माइनस होगा. 50 minus 10 is equal to 40.